this will be the time complexity and the space complexity. If you look at the space, it's again the of the data type. Any possible integer is gonna give you its binary equivalent in the format of a string. You can do it in terms of list or any of the data types or data structure as you wish to. So what is the time complexity? Can I analyze the time complexity? It's very simple. I'm dividing it by 2, dividing it by 2. If you would have seen my binary search videos, you know, right? Logarithmic base 2n. When you divide it by 2, it's always logarithmic base.
remainders will be same, and that is the space that this resultant string will take, right? Or quite simple. So this will be the time complexity and the space complexity if you are looking forward to convert a decimal to a binary. So try out the reverse one as well, that is converting the binary to its decimal equivalent. So it'll be given a string and it'll have to return an integer, correct? So returning an integer, convert to decimal, and you will be given a string, right? So let's assume string x. Now what is the first thing that you would be doing? You'll be traversing in the backward direction, correct? Starting from this one, then going to this, then going to this, then going to this, correct? So you'll be traversing in the backward direction. So let's do that. So I'll be like, okay, what is the length of the string? X dot size or length, depending on whatever programming language you're using. After this, what will you be doing? You'll be running the reverse for loop. So that basically starts from length minus 1 and goes till 0th index, correct? Now what am I doing? I'm taking whatever it is. If it is 1, I'm taking it, right? And I'm multiplying that with 2 raised to the power something, right? After that, I'm multiplying it with 2 raised to the power 1. After that, 2 raised to the power 2. So every time there is an increment or a multiplication of a power of a 2, correct? So what is the initial power of 2? If I ask you power of 2, P2, let's say power of 2. Can I say initially it's 2 to the power 0, which is 1. Power of 2 is 1. And the number that I'm looking for initially is 0. I'm very sure about that. So what will I do? I'll say, okay, hey, listen, if x of I is equal to 1, if that character is 1, because that has to be 1, be very sure about one thing. If the character is 0, doesn't matter what you're multiplying it with, it will always be 0, correct? So only if it is 1, in that case, you'll say, okay, number plus, you're multiplying 1. Multiplication of 1 with anything doesn't, it's just this power of 2 that you'll take. It is just the power of 2 that you'll take. So number plus power of 2, correct? And for the next step, power of 2 will be power of 2 multiplied with factor is 1, because that has to be 1. Be very sure 1. After that, with king, whatever it is, correct? Now what am I doing? I'm taking whatever it is. If it is 1, I'm taking it, right? And I'm multiplying that with 2 raised to the power something, right? After that, I'm multiplying it with 2 raised to the power 1. After that, 2 raised to the power 2. So every time there is an increment or a multiplication of a power of a 2, correct? So what is the initial power of 2? If I ask you power of 2, P2, let's say power of 2. Can I say initially it's 2 to the power 0, which is 1. Power of 2 is 1. And the number that I'm looking for initially is 0. I'm very sure about that. So what will I do? I'll say, okay, hey, listen, if x of I is equal to 1, if that character is 1, because that has to be 1, be very sure about one thing. If the character is 0, doesn't matter what you're multiplying it with, it will always be 0, correct? So only if it is 1, in that case, you'll say, okay, number plus 1, multiplication of 1 when complexity. Can I say your time complexity will be big O of the length of the string? And what will be the space complexity? It's gonna be a big O of 1, because I'm just storing it in an integer, correct? So this is how you convert a binary to its decimal equivalent. So we know how to convert a decimal to a binary and a binary to a decimal. And I would
So we know how to convert a decimal to a binary and a binary to a decimal. And I won't be doing anything else like all the other thing like octal and hexa and all the other conversions. The reason being, this is the only thing that we'll be requiring for solving problems in DS Algo. So let's understand one thing. When I write something as int x equal to, you can do is does the computer really store 13? Binary to its decimal equivalent. So we know how to convert a decimal to a binary and a binary to a decimal. And I won't be doing anything else like all the other thing like octal and hexa and all the other conversions. The reason being, this is the only thing that we'll be requiring for solving problems in DS Algo. So let's understand one thing. When I write something as int x equal to 13, does the computer really store 13? Doesn't. Why? Because the computer only understands ones and zero, right? It doesn't understand something like 13. So what happens behind the scenes is this 13 is converted into its decimal equivalent, which is 1101. That is the decimal equivalent. Does it store 1101 base 2? No, it doesn't. Why? Because there is something as integer stores in its memory because it only understands 1 and 0. Now, whenever you're trying to read x, assume you say print of x. Why is 13 getting printed? What happens is the reverse conversion happens, gets converted into the decimal and then is printed. The computer never stores the decimal, always converts the number into the binary and then stores it. Remember this. Now you might be thinking, okay, integer is 32, is 64. So I won't be going for long because most of the problems I'll be teaching with integer and they can be applied to long as well. It can be just extended because the concepts are same. The only difference will be 64 bits. I'll be teaching in terms of 32 bits. You can extend it and apply it to 64 bits as well. So before getting into the bitwise operators and the problems, we'll be learning about two more concepts. Again, it won't be required in problem solving, but it is just good to know. The first one is ones complement. Imagine I give you a number 13 and I ask you, hey, what is the complement?
Imagine I give you a number 13 and I ask you, hey, what is the ones complement of 13? So what you do is, you basically write it in terms of binary. 1101 is the binary. Once you have written that, you convert that, like you flip all the bits. Yes, you'll be flipping all the bits. So once you flip all the bits, you'll have something like 0, 0, 1, 0 in terms of binary. And this is your ones complement. Got it? Now 2's complement is super simple. The step 1 of 2's complement is figure out the ones complement of the given number. And the step 2 is add a 1 to it. Add a 1 to it. Quite simple. So if I ask you, hey, 13's 2's complement, it's very simple. You convert 13 to its ones complement. Once that is done, you add a plus 1 to it. Again, you might not have done binary additions, but just take it as a thumb rule as of now. So what you basically write is 0, 0, 1, 0. You add a 1 to it. So when you add a 1 to it, this will be zeros, because if you don't give anything, that is basically considered as 0. So 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0. Just as of now, do not think about the addition, just understand this, that you add 1 to it. So this is your 2's complement. Very simple. Figure out the 1's complement, add a 1, get the 2's complement. Super simple. Got it? So we need to learn about the operators that we will be using in bitwise manipulation. Why? Because without operators, you cannot solve problems. So we'll be learning about AND operator, OR operator, XOR operator, shift operator, and the NOT operator. So let's get started, and I'll be starting off with the AND operator. Very simple. AND operator, probably I'll just start over here. AND operator means all true means true, 1 false means false. Remember this. What does this mean? So if I write something as x equal to 13 and 7. So what happens in the background is 13 is converted into its binary, which is 1, 1, 0, 1. Again, 32 bits because it is integer. So you'll always have 0, 0, 0, 0, something like that. But I will not be writing it because zeros, they don't come into picture that much. What is 7? 7 is 1, 1, 1. That is 7 if you try to convert it into binary. Again, 0, 0, 0, 0, 0. Around 29 bits of zeros. So you do an AND with it. So again, you can fill this with 0 because there's nothing. So when I say all true, all means in this particular row, there might be another number, 9. There might be 4 numbers that you're doing AND with. Whatever, if there is 1 over here, all has to be, like all of them has to be 1. Then only you can write 1. So both of them are 1 or binary when you do an AND. And what is this number? This is nothing but 5. Yes. So the resultant that you will be getting is 5 when you do an AND operation. I hope you've got the AND operator. So AND operator is done. The next one is OR operator. True. When you do an operate true, there's 4 and 2, right? So what is the next one? XOR. So let's understand the XOR operator now. So XOR operator is very simple. If you have number of ones as odd, you'll always get 1. If the number of ones are even, you'll always get it as 0. Remember. So what is the next one? XOR. So let's understand the XOR operator now. So XOR operator is very simple. If you have number of ones as odd, you'll always get 1. If the number of ones are even, you'll always get it as 0. Remember this. So if I say x equal to 13, the symbol of XOR is this, 7. 13 is 1.
1, 0, 1. 7 is 1, 1, 1. And if I do a XOR, which is this, how many ones are there? 2, which is even. So this will become 0. How many ones are there? 1, which is odd. So this will become 1. How many ones are there? Oh, my bad. This will be again 0. If this is 0, this is going to be 1 because odd. And over here, there are 0 ones. So 0 ones means even ones. Again 0. So technically, all will be 0. So this is the number that you will get. And what is the value? The value is 10, because if you try to convert this into its decimal, this is 2, this is 8, and rest of all are 0. So 8 plus 2 will be 10. So 10 is what you will get. So you're done with the XOR operator as well. The next one is shift. So you're done with the XOR operator. Now it's time to understand the shift operators. So let's start with the first shift operator, that is the right shift operator. There's one more, that is the left shift operator. We'll come to that afterwards. So we write something as x equal to 13 right shift of 1. So this is the symbol of right shift. So we write something as 13 right shift of 1. You can write it 2, you can write it 3. What does it mean? 13 means 1, 1, 0, 1. That is in binary. And there are zeros, right? Lots, 28 zeros on the left. So when I say right shift by 1, it means this one goes off the cliff. Yes, this will go off the cliff. And the 0 will be here. This one will be here. This one will be here. What about the rest? There were zeros, right? Again, this 0 will be here. This 0 will come here. So technically, there are all zeros on the left. So this is what happens. This is what happens. And what is this number? This number is nothing but 6. So you get something as 6. Keep this in mind. It is going to be helpful as we move forward. Let's do one more thing. Let's say x equal to 13 right shift of 2. Okay. So again, that's 1, 1, 0, 1. When I say right shift by 2, this will go off the cliff and this will go off the cliff. 2 places. So this will come to the right. This will come over here. This 0 will come over here. This 0 will come over here. Again, this will be filled with zeros. So what's this number? This number is 3. Again, keep it in mind that this number is 3. I can probably say x equal to 13 right shift of 4 as well. I can say that as well. So if I say that, what will happen will go off. This 0 will be... There is a very simple formula to get this value. It's very, very simple. So if I say 13, or if I say by that reason x right shift by any number k, it basically means x divided by 2 to the power k. Yes, that is how the formula is, and I can prove. The power k. Yes, that is how the form. So that let's work on this. So 13 divided by 2 to the power 1.
which is 6, right? 13 by 2 is 6. 13 divided by 2 to the power 2, that's basically 13 by 4, that's 3. 13 divided by 2 to the power 4, which is 13 divided by 16, which is 0. Works. Why does it work? So I'll take a very small example. This one, in order to explain why does it work. So I'm saying 13 right shift of 1. So let's understand what is 13 initially. 13 is 1101. Let's try to write down it in terms of the decimal conversion. That's 1 into 2 to the power 3. That's 1 into 2 to the power 2 plus 0 into 2 to the power 1 plus 1 into 2 to the power 0. Agreed? Agreed though. So when I say 13 right shift of 1, what is the number that I get? Or rather, what is the binary that I get? 110. So let's try to write it as well. 110 because the 0 will be here, this one will be here, and this one will be here. This is what we get. And what happens is, this one, right, this one, which is initially here, now comes one place to the right. Thereby, it ends up being 1 into the power 2 plus 1 into the power 1 plus 0 into the power 0. This happens, right? And this is off. This is off. This is off the cliff. So technically, this is off the cliff, right? And this number is same. This number is same. This number is same. What has changed? Do you see something? 2 to the power 3 is 2 to the power 2. Technically, if I just take 1, 2 out of it, 1, 2 out of it, do I get this? I do get it. That is why if you're doing one right shift, 2 to the power k divided by 2 to the power 1. If you're doing two right shifts, divided by 2 to the power 2. Got it? So we are done with the right shift operator. Now there's one more shift operator, that is the left shift operator. But before that, one thing. When I write something as x equal to 13, the computer stores it in terms of 1101. A simple binary because it's a positive number. But what happens when I write something as x equal to minus 13? How does the computer store this minus? For that reason, how does the computer store this particular positive thing? Way to know this as well, right? Let me explain you. I told you that integer has 32 bits. Remember one thing, the first bit or the last bit, if you talk about from left to right, which is basically the 31st bit, that is reserved for sign. That is reserved for sign, and the rest are used to store numbers. Like in this case, it will be 0, 0, 0, and then 1, 1, 0, and 1. This is how I will be storing 13. What will be the sign? It's very simple. 0 for positive, 1 for negative. So what happens is, I say 0 over here. So this is a sign bit, and the rest are used for storing numbers. Okay, fine. What about x equal to minus 13? How does the computer store it?
this is a sign bit, and the rest are used for storing numbers. Okay, fine. What about x equal to minus 13? How does the computer store it? Very simple. 2's complement. Remember that? We're going to use that over here. So when I say minus 13, right, what we do at the first step is we write down the simple plain positive number 30, which is basically starting from 0, goes on till 1, 1, 0, 1. So we write down the plain positive number. Now whenever the computer has to store a negative number within itself, it converts it into its 2's complement. So we'll be converting this into its 2's complement. What will be it? You know it. First step is 1's complement, which is flipping all the bits. It's going to be 1, 1, 1, all 1's, 0, 0, 1 and 0. So 1's complement is done. Once 1's complement is done, you add a plus 1 to it. So once you add plus 1 to it, what happens is you get 1, 1, 0, 0 and these all are 1's. And the last bit is also 1. And the last bit is also 1 because of the flip that you did. The last bit is also 1. So this will tell you that this is a negative number. And this is how it understands that if it is storing a 2's complement, it means that it is storing a negative number. So this is what will be stored internally. Got this? So now you know how to store a negative number as well. So very simple question. What is the largest integer that integer variable can or data type can store? So can I say the last one is reserved for sign, right? So it will be 0 for sure because 0 means positive. If I try to fill all these with zeros, will it make sense? Then the overall number will be 0. Doesn't make sense, right? So can I say this? That, okay, probably I can have 1, 1 and all filled with 1's. Yes, which is technically. Got this? So now you know how to store a negative number as well. So very simple question. What is the largest integer that integer variable can or data type can store? So can I say the last one is reserved for sign, right? So it will be 0 for sure because 0 means positive. If I try to fill all these with zeros, will it make sense? Then the overall number will be 0. Doesn't make sense, right? So can I say this? That, okay, probably I can have 1, 1 and all filled with 1's. Yes, which is technically nothing but 2 to the power 30 plus 2 to the power 29 plus 2 to the power 28 and so on till 2 to the power 0.
Can I say this? I can. Which is nothing but 2 to the power 31 minus 1. So this is the largest possible value that you can store in an integer. And this is technically, like you might have seen this integer max. This is this value integer max. So the next question, what will be the smallest number that it can store? And you might think, okay, minus of 2 to the power 31 minus 1. No. Remember this, that the computer uses the last bit to understand the sign. Can I do something so that the last bit, apart from the last bit, I'm using all the bits? Probably yes. Forget about 32 bits as of now. What if I take 2 to the power 31? Okay, I say minus. So what is 2 to the power 31 in terms of bits? It's nothing but 1, 0, 0 and all zeros. These are the 32 bits, starting with 1. As of now, I'm not thinking about sign bits. I know one thing. Whenever I write a minus, the computer will never store it like this. So I'm not using the last bit because the computer will never store it like this. So I'm not using the last bit. What the computer does is, it converts it into its 2's complement. So the first, the 1's complement is inverting. So this will be 1, this will be 1, this will be 1. All of them will be 1 apart from the last. Perfect. What is the next step to get 2's complement? Add a plus 1. So when you add a plus 1, what happens? So basically what happens is, you get 1 plus 1, 0, carry over 1, again 0, carry over 1, again 0. So eventually you get all zeros, carry over 1, 0, carry over 1 and 1. So this is what you get, all zeros, yes. And this kind of tells you that, hey, listen, yeah, I'm correct. This is what you get. This tells me that this is negative, and since this is 2's complement, all of them are zeros. All of them are zeros. It kind of tells me that this is minus 2 to the power 30. All of them are zeros. Because of 2's complement, I'm able to store it. And this is what you generically say as int mean. This is the minimum value of integer that you like. This is the minimum value that you can store in an integer data type. So if you carefully see, I was using the last bit over here because I know if I take a negative number after making a 2's complement, it will work out. Because the last bit will be used to identify positive or negative. I couldn't use the last bit over here. Why? Because if I put a 1, it clearly tells me it's a negative number, but I cannot, I have to keep it 0, right? So in terms of negative number, you convert it into 2's complement. In case of positive number, you keep it as it is. So it is time to come back to the left shift operator. Let's understand the left shift operator in depth. This is the minimum value that you can store in.
हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने अरे प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 52 करने जा रहे हैं। मीडियम लेवल क्वेश्चन है, बट इसे काफी इजी बना दिया जाएगा। और ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को दो प्रोसेस से बना रखा है, सॉर्टिंग से और हीप के मेथड से। और मेरे हीप के प्लेलिस्ट में लीड कोड नंबर 215 का सॉल्यूशन ऑलरेडी है। ये सेकंड वीडियो बनाई है मैंने ताकि मैं इसी क्वेश्चन को क्विक सेलेक्ट पार्टीशन के मेथड से सॉल्व करके दिखा सकूं। क्वेश्चन का नाम है केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन अरे, और आज हम इसको अपने थर्ड अप्रोच यानी कि क्विक सेलेक्ट अप्रोच से बनाएंगे। और मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा है, ठीक है। और मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरे हीप के प्लेलिस्ट में जाओ, उसका 12th वीडियो मैंने सेम क्वेश्चन को सॉल्व किया है यूजिंग सॉर्टिंग एंड यूजिंग मिनिमम हीप। ओके, ये थर्ड अप्रोच को मैं बताने के लिए मैं दोबारा आया हूँ इस पे। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, नम्स अरे है, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल के देना आपको, ठीक है, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट। ओके, अब देखो अप्रोच 1 मैंने बता दिया था। यूजिंग सॉर्टिंग अपने हीप प्लेलिस्ट के 12th वीडियो पे। अप्रोच 2 भी उसी वीडियो में बता दिया था। आज अप्रोच 3 बताना है यूजिंग क्विक सेलेक्ट। अच्छे से क्विक सेलेक्ट को समझेंगे, ठीक है, और इंट्यूटिवली समझेंगे। मैं आपको एल्गोरिदम रटवाऊंगा नहीं कि हुअर्स एल्गोरिदम ने क्या बोला था, और एज इट इज कोड नहीं लिखूंगा, ठीक है। आपको लॉजिक भी समझ में आना चाहिए ना कि क्यों लिखा है, वरना फिर भूल जाओगे, ठीक है। समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो पेशेंटली इसको समझो। ओके, देखो इसको स्टार्ट करने से पहले ना एक बड़ा बेसिक सा चीज आपसे पूछता हूं मैं, कि मान के चलते यहाँ पर एक एलिमेंट है ए, ठीक है, और मैं आपको ये बोलता हूँ कि ए के लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट है ना, सब उससे बड़े हैं। मतलब सारे जो हैं वो ग्रेटर देन ए हैं, जितने भी एलिमेंट है। मान लेते हैं यहाँ पर बी है, सी है, डी है, ठीक है, लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट है। और ए के राइट साइड में जितने एलिमेंट है वो सब ए से छोटे हैं, ठीक है। मतलब ए बड़ा है उन लोगों से। मान लेते हैं ई है, एफ है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि बी सी डी को अलग से सॉर्ट करो। मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा कि आप ई और एफ को सॉर्ट करो। बस मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि आप बस इतना इंश्योर कर लो कि ए के लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट है ना वो ए से बड़े होने चाहिए, और ए के राइट साइड में जितने एलिमेंट है वो ए से छोटे होने चाहिए, ठीक है। इससे देखो फायदा क्या होगा। देखो तो ए के लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है तो, और ए के राइट साइड में 2 एलिमेंट है, ठीक है। ए के लेफ्ट साइड पर ध्यान दो, यहाँ 3 एलिमेंट है ना, तो आप देखो इन लोगों को सॉर्ट करोगे भी ना। मान लेते सॉर्ट कर दिया बी सी डी, तो कैसे भी इसको सॉर्ट कर लो, रीअरेंज कर लो, सारे एलिमेंट्स ए से तो बड़े ही है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए ये तीनों तो एनीवेज लेफ्ट साइड में ही रहेंगे ए के, है ना, क्योंकि ये सारे एलिमेंट ए से बड़े हैं और मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में मान लेते हैं चाहिए। तो सारे के सारे को कैसा भी अरेंज कर लो, वो ओ के लेफ्ट साइड में ही रहेंगे ना, ए के लेफ्ट साइड में ही रहेंगे ना, क्योंकि वो ए से बड़े हैं और मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है। तो ए के लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो मैं 110% होके ये बोल सकता हूँ ना कि ये चौथा बंदा है, ये फोर्थ एलिमेंट होगा, ये फोर्थ एलिमेंट होगा। अगर इसको सॉर्ट कर दिया जाए पूरे के पूरे अरे को, अगर इस पूरे के पूरे अरे को सॉर्ट कर दिया जाए तो ये जो ए है ना, ये मेरा फोर्थ बंदा होगा। या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो मेरा ए है ना वो फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, पक्का। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ए के लेफ्ट साइड में सारे एलिमेंट ए से बड़े थे, बी सी डी, ठीक है। तो इन बी सी डी में हो सकता है कोई फर्स्ट लार्जेस्ट हो, सेकंड लार्जेस्ट हो, थर्ड लार्जेस्ट हो, उसके बाद ए आया, तो 110% श्योर हो ना कि ए फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट है। और ई और एफ का टेंशन मत लो, क्योंकि ई और एफ तो छोटा है ए से। मैंने बोला था ना कि ए के राइट साइड में जितने एलिमेंट है वो ए से छोटे हैं। मुझे फोर्थ लार्जेस्ट चाहिए, मैंने इंश्योर कर लिया कि ए के लेफ्ट साइड में जो 3 एलिमेंट है वो सारे ए से बड़े हैं, तो पक्का ये चौथा एलिमेंट है, ए जो कि बड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना। देखो सेम यही कोर कंसेप्ट यही है, ठीक है। और जब पार्टीशन एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा ना तो ये चीज़ दोबारा आएगा, ठीक है। अभी आप यहाँ ध्यान दो, आपने क्या किया था, आपने ऐसा कुछ किया जिससे ए यहाँ पर आया और ए के लेफ्ट साइड में सारे ए से बड़े हो गए और राइट साइड में सारे ए से छोटे हो गए, तो ए फोर्थ लार्जेस्ट हुआ।
बट किसी ने बोला भाई नहीं मुझे फोर्थ लार्जेस्ट नहीं चाहिए, मुझे थर्ड लार्जेस्ट वाला बंदा चाहिए, मुझे थर्ड लार्जेस्ट वाला बंदा चाहिए, तो मैं बोलूंगा ना कि अच्छा थर्ड लार्जेस्ट चाहिए, बट मैंने तो फोर्थ निकाल दिया है, तो मुझे लेफ्ट साइड में ही कहीं देखना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में देखो तो कौन कौन है, बी सी और डी है ना, लेफ्ट साइड में बी है, सी है और डी है, याद करो लेफ्ट साइड में बी सी और डी है ना, तो याद करो ए जब फोर्थ लार्जेस्ट था, किसी ने मुझसे पूछा भाई थर्ड लार्जेस्ट चाहिए, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं कहाँ जाऊंगा, लेफ्ट साइड जाऊंगा, देख रहे हो लेफ्ट साइड बी सी डी के पास जाऊंगा, ठीक है। तो मुझे बी सी डी मिल गया यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पर निकालना है थर्ड लार्जेस्ट, है ना। तो इसमें याद करो इसमें क्या होगा, मान लेते थर्ड लार्जेस्ट मेरा डी है, तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि डी यहाँ पर आ जाए, ठीक है, और डी के लेफ्ट साइड में सारे उससे बड़े एलिमेंट होंगे बी और सी, और डी के राइट साइड में सारे उससे छोटे एलिमेंट होंगे। सिंस यहाँ पर कोई भी छोटा एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर नहीं डालेंगे, ठीक है। तो अब देखो सिंस हमारा लेफ्ट साइड में दो एलिमेंट है और दोनों डी से बड़े हैं, ठीक है, तो पक्का ये तीसरा एलिमेंट होगा, ये थर्ड एलिमेंट होगा, ठीक है। और सिंस ये डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो ये सारे बड़े थे डी से, उसके बाद जस्ट बड़ा ये है, उसके बाद तो छोटे हैं राइट साइड में, ठीक है, तो ये पक्का थर्ड लार्जेस्ट होगा, ठीक है। कंसेप्ट यही है। अब सही यही सेम कोर कंसेप्ट ना अभी अपने पार्टीशनल एल्गोरिथम में लगाएंगे, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और पार्टीशन एल्गोरिथम लगाने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बोल दूं कि याद करो इस बार मैंने फोर्थ लार्जेस्ट निकाल लिया था, लेकिन किसी ने मुझे बोला कि भाई थर्ड लार्जेस्ट चाहिए, तो मैं लेफ्ट साइड चला गया था। अगर मान लेते वो बंदा बोलता भाई फिफ्थ लार्जेस्ट चाहिए, तो मैं राइट साइड चला जाता, राइट है ना, राइट साइड चला जाता। तो यही सेम कंसेप्ट अभी हम लगाएंगे अपने पार्टीशन एल्गोरिथम में, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना हेयर्स पार्टीशन, ठीक है, क्विक सेलेक्ट एल्गोरिथम समझने की कोशिश करते हैं। देखो अभी स्टार्टिंग में तो पूरा का पूरा अरे पे सर्च मार रहे हैं ना, तो यहाँ पर एल लिख देते हैं, यहाँ पर इसको एल मान लेते हैं और इसको आर मान लेते हैं। याद करो ना जब मैं समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं बोल रहा था ना कि पहले पूरा अरे पे सर्च मारा हमने, फिर उसको डिवाइड किया यहाँ पर ऐसे इधर हाफ और इधर हाफ में, लेफ्ट और राइट में, ठीक है। और किसी ने पूछा था, ये याद है फोर्थ लार्जेस्ट मिल गया था, तो किसी ने बोला थर्ड लार्जेस्ट चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम मैं इस पे सर्च मार रहा था, एल यहाँ आ जाता, आर यहाँ आ जाता, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में तो पूरा का पूरा अरे है ना, तो एल यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, ठीक है, बढ़िया। अब याद करो मैंने बोला था ना कि किसी एक एलिमेंट को लेंगे और ऐसा करेंगे कि वो एलिमेंट बीच में हो और उसके लेफ्ट साइड में सारे बड़े एलिमेंट हो ए से, और राइट साइड में सारे छोटे एलिमेंट हो। अब वो एलिमेंट आप किसी को भी चुन सकते हो, ठीक है, वो एलिमेंट आप किसी को भी चुन सकते हो सकता है वही आपका केथ लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाए, हो सकता है, तो किसी को भी चुन लो, तो उसी को पिवट बोलते हैं, है ना, उसी को पिवट बोलते हैं, जिसको आप चुनते हो ना बीच में और लेफ्ट साइड में बड़े एलिमेंट राइट साइड में छोटे एलिमेंट, उसको पिवट बोलते हैं इसको। तो अब देखो पिवट चुनने का भी बहुत सारा तरीका होता है, एक कुछ लोग बोलते हैं रैंडम कोई इंडेक्स उठा लो उसको पिवट चुन लो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अब देखो अब आप पर है, आप किसी को भी पिवट चुन सकते हो, मैं पिवट चुनता हूँ इसको, ठीक है, मैं पिवट इसको चुन लेता हूँ जो लेफ्ट मोस्ट पर है, ठीक है, किसी को भी चुन सकते हो। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले याद करो मैंने आपको बोला था ना कि जो पिवट बंदा है कुछ ऐसा होना चाहिए कि पिवट बीच में हो, लेफ्ट साइड सारे बड़े एलिमेंट, राइट साइड सारे छोटे एलिमेंट, ठीक है। तो एक एग्जांपल लो, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर बी है, ठीक है, जो कि पिवट एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं एक्स है और यहाँ पर वाई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो है बी से बड़ा होना चाहिए, है ना, एक्स शुड बी ग्रेटर देन बी एंड वाई शुड बी लेस देन बी, यही होना चाहिए ना। बट अगर मान लो एक्स लेस देन बी हुआ तो, और वाई अगर ग्रेटर देन बी हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो वाई ग्रेटर देन बी है ना, तो वाई को लेफ्ट साइड होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पिवट के लेफ्ट साइड में सारे बड़े एलिमेंट होंगे। तो देखो इफ x इज लेस देन b एंड y इज ग्रेटर देन b, तो हमें क्या करेंगे, y को यहाँ ले आएंगे, x को यहाँ ले आएंगे। x को क्यों यहाँ राइट साइड ले आए, क्योंकि b से छोटा है वो, ये रहा, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। तो सेम चीज मैं यहाँ पर लगा,
लगाऊंगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सेम चीज मैं इधर अभी लगाने वाला हूँ, ठीक है। ड्राई रन से ही देखना आप कोड आप समझ जाओगे पूरा का पूरा, ठीक है। अब देखते हैं लेफ्ट साइड में ये ith एलिमेंट है, ये यहाँ पर j है, ठीक है। और पिवट तो अभी मेरा 3 ही है, यहाँ तक क्लियर है। तो याद करो मैंने बोला था ना ये x है और ये y है, और ये मेरा पिवट भी इसी को मैंने मान लिया, ठीक है। तो मैंने लिखा था ना कि जो नम्स ऑफ i है, ठीक है, नम्स ऑफ i है, अगर वो लेस देन पिवट है ना, नम्स ऑफ जो भी पिवट इंडेक्स है मेरा, नम्स ऑफ p, या तो डायरेक्ट p में स्टोर कर लेंगे पिवट एलिमेंट, अगर p से वो छोटा है, एंड जो नम्स ऑफ j है वो अगर ग्रेटर देन p है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें पोजीशन चेंज करना पड़ेगा इनका, राइट। देखो नम्स ऑफ i लेस देन p है ना, तो जो लेस देन है उसको राइट साइड जाना पड़ेगा, ठीक है। बट ये तो है लेफ्ट साइड में, तो उसको राइट साइड भेजना पड़ेगा। तो उस केस में क्या करते हैं, स्वैप कर देते हैं नम्स ऑफ i को और नम्स ऑफ j को। ये कंडीशन तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। बट यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या, देख लेते हैं। नम्स ऑफ i में कौन है, 3 है। नम्स ऑफ j में कौन है, अच्छा पिवट एलिमेंट क्या है, 3 है। और नम्स ऑफ j में कौन है, 4 है। पिवट एलिमेंट क्या है, 3 है, ठीक है। तो ये तो कंडीशन पास नहीं हो रहा है ना, ये कंडीशन तो पास नहीं हो रहा ना, 3 लेस देन 3 थोड़ी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। बट देख लेते हैं ना, अब सिंस ये दोनों स्वैप होने लायक तो नहीं रहा, ठीक है, ये कंडीशन तो नहीं हुआ, तो या तो अब क्या हो सकता है कि नम्स ऑफ i, ठीक है, वो ग्रेटर देन p हो ऑलरेडी, या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू p भी हो सकता है, डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, ठीक है। और देखो ये एकदम सही चीज भी है ना, ये तो ऑलरेडी वही चीज है जो मैं चाहता हूँ। देखो नम्स ऑफ i ग्रेटर देन इक्वल टू p ये है और i याद है लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में सारे p से बड़े एलिमेंट होने चाहिए, और देखो ऑलरेडी बड़ा है भी। तो अगर ये केस है तब तो ये हैप्पी केस है ना, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, i को आगे आगे बढ़ा दूंगा, बस हमें जो चाहिए था वो तो मिल गया, i प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। या फिर नम्स ऑफ j जो है, j मतलब p के जो राइट साइड में एलिमेंट्स है उसको p से छोटा होना है, तो ऑलरेडी वो p से मान लेते हैं छोटा है, लेस देन इक्वल टू p है या बराबर है, तो ये भी तो हैप्पी केस हुआ ना हमारा, ये भी तो हैप्पी केस हुआ। तो इस केस में क्या करेंगे, j माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हैप्पी केस है। बस स्वैप हमें कब करना है, स्वैप हमें बस इस वक्त करना है जब दोनों गड़बड़ हो, है ना। ये लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट पिवट से छोटे हो गए और राइट साइड वाले एलिमेंट पिवट से बड़े हो गए, तब स्वैप करना पड़ेगा, राइट। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन सा केस है। यहाँ पर हमारे पास पहला केस तो नहीं हो पाया क्योंकि 3 लेस देन 3 तो है नहीं, ठीक है। दूसरे केस में देखते हैं, क्या नम्स ऑफ i ग्रेटर देन इक्वल टू p है। नम्स ऑफ i क्या है, 3 है ना, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू पिवट वाला एलिमेंट कौन है, 3 है, बढ़िया। तो मतलब ये देखते हैं, क्या नम्स ऑफ i ग्रेटर देन इक्वल टू p है। नम्स ऑफ i क्या है, 3 है ना, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू पिवट वाला एलिमेंट कौन है, 3 है, बढ़िया। तो मतलब ये करेक्ट है, तो i को आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। i को आगे बढ़ा दिया, देखो यहाँ पर i आगे आगे बढ़ गया, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी देखना और क्लियरिटी आएगी।
और ये भी देख लेते हैं क्या नम्स जे लेस देन इक्वल टू पी है। नम्स जे क्या है भाई 4 है, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है? बिल्कुल नहीं, तो जे तो वहीं पर रहेगा अभी, ठीक है, जे अभी वहीं पर रहेगा। ओके, अब आई यहाँ पर आ गया और जे यहाँ पर आ गया। अब देखते हैं नम्स ऑफ आई क्या है 2 है, लेस देन पी क्या है 3 है, एंड नम्स ऑफ जे क्या है 4 है, ग्रेटर देन पी क्या है 3 है। देखो ये पास हो गया ना, ये केस इफ कंडीशन पास हो गया। इस केस में क्या करेंगे, देखो 2 को राइट साइड होना चाहिए ना भाई, क्योंकि 2 छोटा है, छोटे एलिमेंट को राइट साइड रखना है, और 4 बड़ा है ना 3 से, पिवट से 4 बड़ा तो उसको लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो इन दोनों को मैंने स्वैप मार दिया, ठीक है, यहाँ पर 4 ले आया और यहाँ पर देखो 2 ले आया। ये सिंस ये काम हो गया, अब आई को आगे आगे बढ़ा दिया और जे को पीछे पीछे बढ़ा दिया। देख रहे हो आई प्लस प्लस एंड जे माइनस माइनस, तो यहाँ पर करना भूल गया था, आई प्लस प्लस एंड जे माइनस माइनस। यहाँ तक क्लियर है? अब वो धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा कि जो बड़े एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड आते जा रहे हैं और छोटे एलिमेंट राइट साइड आते जा रहे हैं। यही मेरा गोल है, मुझे यही तो करना है। अब फिर से देखते हैं, नम्स ऑफ आई क्या है 1 है, नम्स ऑफ जे क्या है 6 है, पिवट मेरा 3 है। देखो पहला कंडीशन फिर से ट्रू हो गया। इस केस में क्या करते थे, आई और जे एलिमेंट को स्वैप मारते थे, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1। सिंस इन दोनों का काम हो गया तो आई यहाँ और जे यहाँ, ठीक है। तो वो याद रखना आई लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ था ना, ठीक है, और जे राइट साइड से स्टार्ट हुआ था। अभी देखो आई और जे दोनों एक जगह आ गए हैं। फिर से देखते हैं, आई एलिमेंट 5 है, क्या 5 लेस देन 3 है? नहीं, ये तो इधर ही फेल हो गया। तो आगे यहाँ पर देखते हैं, आई है मेरा 5, क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है? यस, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई यहाँ पर आ गया, ठीक है। एक और कंडीशन था नीचे, क्या नम्स ऑफ जे लेस देन इक्वल टू पी है? नम्स ऑफ जे क्या है 5 है, पिवट है मेरा 3, 5 लेस देन इक्वल टू 3 है? नहीं, तो जे यही का यही रह जाएगा, ठीक है। अब देखो आई और जे क्रॉस कर गया है, तो हमारा इधर ही फॉर लूप रुक जाना चाहिए, वाइल लूप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही वाइल लूप से निकले आपको एक चीज ध्यान में आ रहा होगा, देखो ध्यान दो, बड़े गौर से देखना, जे जहां पर खड़ा हुआ है ना उसके राइट साइड में देखो सारे छोटे एलिमेंट है, ठीक है, और जे के छोटे लेफ्ट साइड में देखो सारे बड़े एलिमेंट है। पता है लास्ट में बस क्या करना, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो पिवट एलिमेंट है उसको जेथ एलिमेंट से स्वैप मार देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 3। अब बड़े अच्छे से देखो, अब देखो ये मेरा पिवट बन गया ना, क्योंकि स्वैप मार दिया इसको, ठीक है। जो पिवट पहले यहाँ पर था उसको मैंने जे में भेज दिया, तो पिवट में यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ कि पिवट अब यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब ध्यान दो, पिवट के लेफ्ट साइड में सारे एलिमेंट पिवट से बड़े हैं, ये रहा, ये देखो 5 4 6। पिवट के राइट साइड में सारे एलिमेंट पिवट से छोटे हैं, ठीक है। अब आएगा मजा, अब देखो देखो पिवट ये डिसेंडिंग ऑर्डर लग तो रहा है, बट ये खुद में सॉर्टेड नहीं है, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता ना, मुझे इतना तो पता है कि पिवट के लेफ्ट साइड में सारे एलिमेंट पिवट से बड़े हैं। तो ये पहला लार्जेस्ट ये है, दूसरा लार्जेस्ट ये है, तीसरा लार्जेस्ट ये है, ये चौथा लार्जेस्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट है, ठीक है। तो मैं गया फिर पूछा कि भाई कितना लार्जेस्ट चाहिए तुम्हें, तो मैंने बोला कि भाई मुझे सेकंड लार्जेस्ट चाहिए, ठीक है। बट मैं किसको ले आया, फोर्थ लार्जेस्ट को ले आया, तो सेकंड लार्जेस्ट कहाँ पर होगा, लेफ्ट साइड में कहीं पर होगा, तीनों में से ही कोई एक होगा ना। फर्स्ट लार्जेस्ट ये है, सेकंड लार्जेस्ट ये है, थर्ड लार्जेस्ट ये है, सेकंड लार्जेस्ट ये, थर्ड लार्जेस्ट ये, तो लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने निकाल के ले आया फोर्थ लार्जेस्ट, ठीक है। इसका इंडेक्स देखो 0 1 2 3, इसका इंडेक्स 3 है, मुझे चाहिए सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, जिसका इंडेक्स कहाँ पर होना चाहिए, 1 पे होना चाहिए ना। अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता तो सेकंड लार्जेस्ट कौन से इंडेक्स पे होता, 1th इंडेक्स पे होता, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में सेम चीज अप्लाई करूंगा, और क्या, इस बार इस देखो अब लेफ्ट साइड मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इस अरे पे छानबीन करूंगा। इस बार एल मेरा ये है और आर मेरा ये है, ठीक है। देख लेते हैं 5 4 6 है ना, तो सेम चीज में जो सेम कांड मैंने ऊपर किया, मैं अब सेम कांड यहाँ के लिए करूंगा 5 4 6 के लिए, ठीक है। एल यहाँ पर है, आर यहाँ पर है।
फिर वही कांड करूंगा कि मैं इसको पिवट मानूंगा, और ये आई और ये जे है मेरा, ठीक है। अब फिर से वही कंडीशन चेक करते हैं, देखते हैं नम्स आई क्या है भाई, नम्स आई 5 है, और उसके बाद कंडीशन क्या था, लेस देन पिवट होना चाहिए, तो लेस देन पिवट, पिवट तो मेरा 5 है भाई, ये तो नहीं होगा, तो पहला इफ कंडीशन पास नहीं हुआ। दूसरा क्या था कि नम्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ठीक है, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू पी है, यस है ना, तो आई को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि जिसको इसको जहां होना चाहिए वो वहीं पर है, आई को आगे बढ़ा दिया। नम्स जे लेस देन इक्वल टू पी है क्या, देखते हैं, नम्स जे क्या है 6 है, पिवट क्या है भाई 5 है, ये तो करेक्ट नहीं है, तो 6 वही का वही रहेगा, जे वही का वही रहेगा, ठीक है। फिर से वही करते हैं, नम्स आई क्या है 4 है, ठीक है, 4 और लेस देन पिवट होना चाहिए, लेस देन पिवट, बढ़िया, पिवट मेरा 5 है, ये तो करेक्ट हो गया। एंड और क्या था, नम्स जे अगर ग्रेटर देन पिवट हो गया, मतलब 6 जो है वो ग्रेटर देन पिवट है, जो कि करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें स्वैप मारना पड़ेगा, राइट, क्योंकि 6 को लेफ्ट साइड होना चाहिए ना पिवट के, तो आई और जे को स्वैप मार दो, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है, और आई यहाँ आ जाएगा, और आई प्लस प्लस करते हैं ना, और जे माइनस माइनस करते हैं, तो जे यहाँ आ गया। देखो आई और जे क्रॉस करके मतलब मेरा वाइल लूप खत्म हो जाएगा, और जैसे ही वाइल रहेगा, कि करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें